हो गया स्टेप 1? सो जो 2 महीने के अंदर जो स्टेप 1 है अप्रैल और मई 24 में, इसमें आपको एनसीईआरटीज रीड करनी है, अपने सोर्सेज कलेक्ट करने हैं एंड यू हैव टू डू मिनिमम रिसर्च वर्क। मिनिमम रिसर्च वर्क एज अशद मेंशन्ड कि क्या क्या सोर्सेज आपके होंगे जब आप कन्वेंशनल या स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगे पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो अभी फाइनलाइज करो वो 2 महीने के अंदर। असद एंड द्विज, वी हैव समवन जो जिनसे आपको मिलना चाहिए। Hello, hi Hello, Asad. sir. Hello, sir. How are you, sir? हाल है? All good, Yeah, sir. आप लोग Would love to meet you. Just for the sake of audience, sir has been a teacher, a mentor, an elder brother, everything for us in the preparation. I have called sir at 4 in the morning, 4:30 in the morning. We have had conversations before my exam when I was sleepless. So that is, I think, the importance of having a mentor, not only a teacher, but he has been a mentor to us because, you know, there are some things that सिर्फ क्लास में पढ़ा के आपको नहीं आ सकती. There are sometimes when you need someone to tell you कि यार I know that I have checked your copies and you are good at it, go and write the exam. Right. So, I still remember कि सर ने मुझे बोला था कि यार अगर तुम दोनों का नहीं होगा तो किसका होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा तो आ रहा है इसमें ना. So glad to see you, sir, again. Hoping to meet you soon. So from August 2024, we'll start with our dedicated mains preparation because as we discussed about the syllabus. So syllabus for mains is very precise and it is very well mentioned. That this is the time that you start reading your newspapers because that is the place from where you will start getting curious about what's going on in the country. And जब आप वो newspaper reading start करोगे, it will take a lot of time initially. So by the time you are entering September, आपके 4-5 महीने प्रिपरेशन के हो गए हैं और आपने स्टैंडर्ड बुक्स भी लगभग कवर कर लिए हैं, तो स्टार्ट गिविंग सेक्शनल टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स. तो वो सेक्शनल टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपने अगर ज्योग्राफी कवर कर लिया है, 2-3 रीडिंग मार लिया है, तो अब तो देना बनता है 2 रीडिंग के बाद. तो Nice to meet you again. हेलो सर. अरे हेलो एवरीवन. हाय हाय द्विज. बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे Sir, we हैं. are so sorry. It's my fault. I can just No explain. problem, no problem. I It's okay. actually It's this all is the right. last day where I had to submit my application for my diplomatic passport, so I was outside and I rushed back home. It's a little mix-up that happened, but sir, we are glad that we're here now. A little late. We are so sorry for making you wait. Great. So thank you very much for coming. आप बहुत बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, आप लीजिए सारे डाउट्स को. गाइस यू कैन अगेन दोनों लोग आ गए हैं तो आप अपने डाउट्स चैट में दोनों को दे सकते हैं. बट बिफोर दैट both Asad sir and Dwij sir will be talking about a 13-month strategy about what should be done for the next 13 months for 2025 students. Let that session get over first. Let's get the basic, क्योंकि आपके ज्यादातर डाउट्स ना उसमें रिजॉल्व हो जाएंगे. एंड आफ्टर दैट विल कीप अ स्मॉल Q&A. So we'll keep a very crisp and concise session on what should be done over the next 30 months, and after that we'll be taking questions. और उसके बाद भी कोई issues रहेंगे तो I'll be coming at the end also, and I'll take care of all other doubts also. Okay, so Asad, Dwij, all over to you. Thank you. Thank you so Thank much, you, sir. ठीक है. Should we ये light बंद करूँ क्या? It's a little dark. हाँ, बस वो ट्यूब लाइट. No. Hi Asad and Dwij, very good Hello. afternoon and welcome Hi, ma'am. to this webinar. हेलो मैम. Hi. Before we begin this webinar, let me give a small introduction. Baki to both of you will tell about your journey and introduce yourself as well. See, Dwij Goel, he attended cleared UPSC CSE in 2022 and got All India rank 71. Though he cleared in the second attempt as well, he got in the reserve list. But in his third attempt, he got the rank 71. He did his BTech from NIT Bhopal. And if we talk about Asad Zuberi has got All India rank 86 in UPSC CSE 2022. And he cleared it in his third attempt. And he also graduated from NIT Allahabad. Yes. So both of you are from NITs only. Yeah, And so both of us I are think very good friends, ma'am. We prepared together, and we are lucky to be there very close to each other in the list as well. yeah, I just got to know that you were working together also for a We were few colleagues. months. Like I think you worked, Yeah, we were colleagues. Yes, you worked we worked as together well in as the same company. and then you started preparing together only. Okay. Right. Okay, so let's begin this webinar by taking I will allow you to say something first to all those who have joined the webinar. Hello everyone, welcome here.
So you must be having a lot of doubts here about how to start the preparation, how to go about answer writing, and what's the way forward. और कभी कभी क्या होता है कि देयर इज दिस सेल्फ डाउट कि इज इट वर्थ डूइंग इट, या उतना हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज सिलेबस इज ह्यूमंगस, काफी बड़ा सिलेबस है. सो विल ट्राई टू रिजॉल्व, I won't say key all of the doubts, but we'll try to resolve maximum of the doubts which you will be having. For this session, first we'll be discussing the 13th month strategy. What should be, this is not an ideal strategy, but this is some kind of strategy which you can implement, or you can make certain changes based on your strengths and weaknesses, and you can implement it based on at what level or at the what progress level you are at the preparation stage. So you can plan it accordingly. We have a 13-month strategy. I would request Pooja ma'am to lead it, and will let us know how to take it forward. Yes, yes. Okay. Sir, I think we should first of all begin with that. Why to choose UPSC? Why to start? Why to? हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर व्हाई, that why UPSC. So I want both of you to talk about it first, so that because I think most of the aspirants who have joined in, they have just begin the preparation. They are thinking of preparing of it. So it's very important for them to also realize that why, और उनको खुद को पता चलना चाहिए कि उनको यूपीएससी क्यों करना चाहिए. So वो हम आपसे पूछना चाहेंगे that why you thought of appearing for this exam. So okay, I'll start with myself first, ma'am. Yeah. So writing UPSC क्या होता है ना, whenever we are going, ma'am, should we talk in English or English and Hindi mix? What kind of audience do we have here? Yes, Because yes, we, I think both language works. Okay, works. I'll speak in English in interest of students who don't know Hindi. So in my case, what happened is that Same both. I always wanted to prepare for UPSC since 2016 or 17, because I got to know about this service called Indian Foreign Service, and this was the only way through which I can get it. As well as then I further inquired about it and got to know that so many different services actually exist. There's so much to work on. So I was looking forward to something, a kind of work which I can derive some meaning out of it. So that is one of the major reasons. Also, I think a lot of our desires, they originate from dissatisfaction. So I was not satisfied with the kind of work that I was doing. So वो दोनों को, I would say it was a combined result of me not being satisfied with what I was doing, and me having the desire to get into certain service that I could get through UPSC. And also these services, they provide you this platform through which you can work for the people of country and be an important part of development of this beautiful country. So all of these things, a mix of all of these things, I think was the reason for me. I also have similar things, like Asad mentioned about the level of satisfaction. So I think one of the reason to join the service is the level of satisfaction you get through your job, the kind of work you do, the kind of things you do for the people, for your country. That matters a lot, because at the end of the day, when you are back at home, so you realize that what you are giving back to the society, or what you are doing for the nation or for yourself also, because that adds to your personal growth when you do something extraordinary, or something which is beyond your natural limits. So and that things add to your value. That thing is for your own growth as well. So that is the one thing. Second thing is, in my case, since childhood only I was aspiring, or I thought of writing UPSC someday. So after my graduation, I started preparing for it. So it is not that I was just restricting myself to UPSC only. I explored other options as well. I thought for engineering service as well. I thought for entrepreneurship as well. So my sincere advice would be just explore it, then make your mind, and then go for it. Okay, great. I think all of you now must have an idea why they chose UPSC. So आप लोग भी self-analyze yourself, self-analyze your needs as well, that why you want to prepare for UPSC. Now, since we're thinking of beginning about, if they have thought कि इनको prepare करना है, तो how to begin with the preparation. Now, if we talk specifically about the preparation only, because those who are beginning it, उनको बहुत confusion होता है कि newspaper reading कैसे करें, how to start the preparation, क्या sources रखें सबसे पहले. तो सबसे पहले let's talk about the beginning only. So I'll start with the 13-month strategy.
So that will cover majority of the things. So I'll start it. So now we are in April. So we have April, May, June 24. Then I'll tell till May 2025. So I'm telling from a beginner's perspective. So the person who would be attending for the very first time, who would be giving attempt in 2025 for the very first time. So they have around 13 months, 12, 13 months roughly. So what they can do if they are starting now, in next 2 months, that is April and May, they can cover basic NCRTs. So now the question comes, which NCRTs? So you need not read all the NCRTs from class 6 to 12, just you need to pick study certain ones, like the NCRTs from history, the NCRTs from polity, art and culture. Then we have 11th, 12th NCRT of geography. That is very important. So there are 4 NCRTs. So there is a list you can easily find on the internet, and that list is common for all the toppers. If you go and you just go through the videos and strategy of people, एक common list निकल के आती है, जैसे अभी द्विज बता रहा है, वो अपनी list बना लो पहले, because this exam is all about restricting your sources. So if you know कि मुझे history में ये किताबें पढ़ना है, you collect them, then you have stuff what to read. Otherwise everything looks so fluid कि आप यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, and then you're not able to read and do anything in the exam, make use of the information that you have collected. तो इसलिए एक part ये कि आप एक book का अपना list बना लो. From internet we have made a lot of videos. Your mentors can tell you everything. Just make that list of the sources that you're going to use. ये हो गया step 1. So जो 2 महीने के अंदर जो step 1 है, अप्रैल और मई 24 में, इसमें आपको NCRTs रीड करनी है, अपने sources कलेक्ट करने हैं, and you have to do minimum research work. मिनिमम रिसर्च वर्क एज अशद मेंशन कि क्या क्या सोर्सेज आपके होंगे जब आप कन्वेंशनल या स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगे, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए. तो अभी फाइनलाइज करो 2 महीने के अंदर. The second thing which you have to do in these 2 months is कि आपको अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लेना है. By the time you are in June 2024, you must know कि आपका फाइनल ऑप्शनल क्या है. तो ये 2 महीने हैं आपके पास डिसाइड करने के लिए. डू मिनिमम रिसर्च वर्क, अपना ऑप्शनल डिसाइड करो, एनसीईआरटीज पढ़ो और स्टैंडर्ड बुक्स के सोर्सेज डिफाइन कर लो. सो दैट वुड बी अ स्टेप 1. हाँ, also I would say इसमें ऐड करूंगा मैं step 1 में that this is the time that you start reading your newspapers, because that is the place from where you will start getting curious about what's going on in the country. And जब आप वो newspaper reading start करोगे, it will take a lot of time initially. आपको 2 घंटा भी लग सकता है newspaper पढ़ने, but over the period of time, जैसे आप UPSC syllabus आप थोड़ा सा याद कर लोगे, आपको पता होगा किस सब्जेक्ट में क्या है, then you can relate to that with the newspapers and see which news is relevant for UPSC preparation, which is not. So gradually वो आपका 2 घंटे से कम हो गया, 1 घंटा 45 मिनट तक टाइम पहुंच जाएगा, and you have to start reading newspapers immediately. And I think newspaper is something that is not only should be read by someone who's preparing for UPSC, but by everyone in general. और उसके लिए कोई previous knowledge नहीं चाहिए होती. न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपको नॉलेज इतनी हो जाती है that आपको न्यूज़ फिर समझ में आने लगती है, you start making a lot of sense out of it. So ये step 1 के साथ क्लब कर देना that you start reading your newspapers. It can be Indian Express, it can be The Hindu or any major newspaper that you like. एंड स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि आप स्टार्टिंग में 2 महीने में न्यूज़पेपर के नोट्स बनाओ, क्योंकि आपका 2-3 घंटा उसी में चला जाएगा. सो प्लीज डू नॉट डू दैट मिस्टेक, है ना. देन वी विल एंटर इन जून 2024. तो यहाँ से क्या होगा कि अभी जितना भी आप टाइम डिवोट कर रहे हो अपने स्टडी के लिए, 8 और 9 आवर्स व्हाटएवर इट इज, तो उसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है बहुत ही क्लियरली. 1 पार्ट आपके ऑप्शनल के लिए, क्योंकि बाय दिस टाइम यू मस्ट हैव डिसाइडेड योर ऑप्शनल. एक आधा टाइम दिन का ऑप्शनल के लिए और आधा टाइम अपना स्टैंडर्ड जीएस के लिए, बिकॉज आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने अभी जीएस की स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं पढ़ी हैं और आप ऑप्शनल में सारा टाइम अभी डिवोट कर दोगे तो भी आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा. सो फ्रॉम जून 2024 व्हाट यू कैन डू, बीच में ऐसा कर सकते हैं कि एक हफ्ते ज्यादा ऑप्शनल कर लिया, फिर उसके बाद से उठा लिया. दैट यू कैन डू एज पर योर कन्वीनियंस, जैसे भी आपको ठीक लगे. बट जून से लेके आपको ऑप्शनल वो दोनों उठा लेने हैं. एंड ऑप्शनल के जो चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर्स, जस्ट रीड इट, डोंट ट्राई टू मेक नोट्स. पहले फर्स्ट रीडिंग में आप नोट्स बनाओगे अगर अपने ऑप्शनल के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के, यू विल फील एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड के कुछ चीजें आपको याद रह जाएंगी एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू पुट देम इन योर नोट्स. और जब आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो ना, मेक श्योर दैट फॉर एग्जांपल इफ यू आर एक्चुअली टेकिंग सम क्लासेस, सो मेक श्योर आप उन क्लासेस को उठा के एंड उसको अपने नोट्स में लिख लो, एंड देन यू विल गेट टू नो कि वो तुम्हारा प्राइमरी सोर्स बन जाएगा फिर. If you're doing your classes, if you're not doing your classes, then your strategy can be कि आप अपना जो basic sources हैं ऑप्शनल के, वो आप रीडिंग कर लो, बट नोट्स पहली रीडिंग में जो है वो मत बनाओ.
ठीक है। ठीक है, तो जब आप अपने ऑप्शनल अपना शुरू कर रहे हो तो नोट्स पहली रीडिंग में नहीं बनाने हैं। व्हाट यू कैन डू कि लेकिन उसको बिल्ड करते रहना है। तो वी आर इन जून, एक पार्ट तो दिन का ये हो गया कि आपको ऑप्शनल करना है। सेकंड पार्ट ऑफ द डे इज कि आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स यहाँ से उठा लेनी है। आई हैव सीन पीपल दे आर 8 months 9 months इनटू प्रिपरेशन एंड दे हैवंट सीन लक्ष्मीकांत टिल नाउ। ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो 2 महीने से अपने एनसीईआरटीज पढ़ लिए हैं, स्टार्ट रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स लाइक पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, ज्योग्राफी की बेसिक एनसीईआरटीज हो गई। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ना जून से शुरू कर देना है, बिकॉज यू विल रिक्वायर मल्टीपल रीडिंग्स फ्रॉम दैट। तो वहां से रीडिंग करना और उनको अंडरलाइन करना वहां से शुरू कर देना है। सो दैट विल गो, जून में चलेगा, देन जुलाई में भी सेम चीज चलेगी। और आप क्या कर सकते हो जुलाई में, जैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कैसे करना है। देयर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स ना, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सोसाइटी ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो कि एक हफ्ते या 2 हफ्ते मैंने एक टफर सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके नेक्स्ट वीक थोड़ा एक लाइटर वन कर लिया, ऑप्शनल में थोड़ा टफर पढ़ लिया। तो इस टाइप से आपको दिन को ना आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि आप दिन में सब कुछ एकदम टफ ही पढ़े जा रहे हो, एकदम सब मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो टफ और एक सॉफ्ट सब्जेक्ट को ना बैलेंस करके चलना है दोनों तरफ हमेशा। एंड मेक श्योर, जैसे अभी मैम ने स्टार्टिंग के लिए पूछा, सो वी हैव ऑलरेडी डन विद आपका स्टेप 1। आपने बुक लिस्ट बना लिया है, आपने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दिया है, आपने अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लिया है। यू हैव ईदर स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस फॉर ऑप्शनल और यू हैव स्टार्टेड रीडिंग मटेरियल फॉर योर ऑप्शनल। सो इसमें हमारे कुछ कितने मंथ चले गए ऑलरेडी? 3-4 4 मंथ्स, मंथ राइट? चले गए जुलाई तक। 4 months चले गए एंड यू हैव डन विद 1 reading of your option as well, राइट। right? So ma'am, this is like the initial beginning of what we can do. uh, I think if you have any question that is planned for us, please let us know. Yeah, sure. I think most of you have made the notes जो सर ने बोला है, कुछ कुछ pointers आपने नोट कर लिए होंगे। But before I proceed, Asad and Dwij, we have someone जो जिनसे आपको मिलना चाहिए। हेलो, हाय Hello, सर। Hello sir. sir. How are you sir? हाल है? All good बढ़िया। sir. आप लोग Would love to meet you. Just for the sake of audience, sir has been a teacher, a mentor, an elder brother, everything for us in the preparation. I have called sir at 4 in the morning, 4:30 in the morning. We have had conversations before my exam when I was sleepless. So that is, I think, the importance of having a mentor, not only a teacher, but he has been a mentor to us, because there are some things that सिर्फ क्लास से पढ़ा के आपको नहीं आ सकती। देयर आर समटाइम्स व्हेन यू नीड समवन टू टेल यू कि यार, आई नो दैट आई हैव चेक्ड योर कॉपीज एंड यू आर गुड एट इट, गो एंड राइट द एग्जाम। राइट। सो आई स्टिल रिमेम्बर कि सर ने मुझे बोला था कि यार अगर तुम दोनों का नहीं होगा तो फिर किसका होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा तो आ रहा है लिस्ट में ना। सो ग्लैड टू सी यू सर So, अगेन, होपिंग टू मीट यू सून आज आज अगर ट्राई सर। करेंगे। डिपेंड्स ऑन sir, we'll talk Dwij Goel. after Yeah, I'll call session. you sir अभी। No, You guys yes carry sir. on. So glad sir. Thank you so much sir. Thank See you so you. much. Thank you, sir. Uh, so I think आप लोगों को एक सरप्राइज मिला होगा सर से मिलके। Yes sir. Yes ma'am. He And was in fact, he I wanted to was he really wanted to meet you. Yes, I yes. am planning to see him Okay. very soon, because हमारी जो relationship है, it's not only till UPSC, it's beyond that. So like very close relationship. ऐसा काफी कुछ हम सुनते हैं सर से आपके बारे में, बताते हैं वो लोग आप दोनों के बारे में। तो यस, वी नो यू। Now, as we move forward, हम लोग let's talk about the syllabus and the role of syllabus and PYQ in this preparation. Because अगर हम we begin, तो as you told, newspapers हो गया, बाकी सब चीजें हो गई, उसके साथ साथ syllabus को study करना कितना important है for both prelims mains. So, ma'am, this is, I think, one of the major aspect हमने step 1 में ही बोला था, that you have to अंडरस्टैंड योर सिलेबस। क्योंकि आप अगर देखोगे ना सिलेबस, पीपल से यूपीएससी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन, अंडर द मून, लोग ऐसे बोलते हैं कि सब कुछ पढ़ना है। आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ, you have to read a lot of stuff, but if you look at the syllabus, every subject, every paper is divided into certain subjects. वो सब्जेक्ट भी मेंस में माइक्रो लेवल पे डिवाइडेड है इनटू सर्टेन टॉपिक्स। एंड आप मेंस के क्वेश्चन देखोगे, दोस टॉपिक्स आर एग्जैक्टली रिपीटेड इन द एग्जाम। सो यू कैनॉट अफोर्ड टू नॉट फॉलो द सिलेबस। सो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो सिलेबस रटते रहते हैं। आई थिंक दैट इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच, दैट्स अ मैकेनिकल अप्रोच। आप सिलेबस को अपने सामने रखो। फॉर एग्जांपल, आई हैड अ बोर्ड जिसमें मैंने सिलेबस लगा के रखा था, सो दैट यू कैन ऑलवेज, व्हेनेवर यू वांट टू गो थ्रू, आपको इंटरनेट पे नहीं डालना पड़ेगा। आपको सामने सिलेबस हैंड रिटन अपना लिखो सिलेबस,
ठीक है, stick it in front of your table, put it somewhere so that you can always refer to the syllabus whenever you feel like you have to. So everything that Dwij and I have talked about in the initial phase, it goes without saying that you are doing everything while keeping your syllabus in hand, be it newspaper reading, be it your standard book reading, be it your optional preparation. Specifically optional तो बहुत ज्यादा important है syllabus पे stick करना. And ma'am, we will take some more minutes to tell about what is going to happen for the next 3-4 months that we wanted to speak about. So Dwij will take it from here. So till now we discussed about phase 1, that is from April 2024 to July 2024, that included basic research work and standard books. So from August 2024 we'll start with our dedicated mains preparation, because as we discussed about the syllabus, so syllabus for mains is very precise and it is very well mentioned. There are certain topics, so you can prepare 2-3 page notes or 4-page note for every topic mentioned in the syllabus. That goes for every GS topic from GS 1, 2, 3 to 4. So from August you can because by this time you must have understood the syllabus, you must have understood the depth of UPSC, you must have gone through the standard books. Now you are also capable to write some answers. So while you are preparing for the GS from August till December 2024, so you should write answers daily or as per your convenience, कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसके कुछ कुछ आंसर्स लिखते रहो. For example, it's always good to start from content heavy papers. For example, if you are reading modern history, then it's very easy to write answers of modern history because that is very content enriched and people usually feel comfortable with modern history. You can write answers of geography. You can write answers of society. So if suppose you are studying society, then make notes of every topic mentioned in the syllabus, communalism, regionalism, and every other topic. प्रिसाइजली उसको देख लो, उसको बना लो, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लो और देन उसकी आंसर राइटिंग साथ साथ करते रहो बेस्ड ऑन द PYQ. क्योंकि अभी अगले फेज 2 दैट इज नेक्स्ट 4 मंथ, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस, फिर आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा अगस्त से, बिकॉज जब जनवरी क्रॉस होता है ना, फरवरी आता है, देन दिस प्रीलिम्स की हवा चलने लग जाती है, देन एवरीवन इज सॉल्विंग PYQs है ना, PTs आ रहे हैं, कंपाइलेशंस आ रहे हैं, आपको टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं. उस chaos में you cannot prepare for mains and cannot practice for answer writing. So your mains preparation actually has to be done in that phase 2 that we already talked about, that we talked about, when you are interacting with GS mains, the syllabus, making your own notes and also starting your answer writing in some sense. और इसके साथ ही ये तो हमारा हो गया GS साइड में. नाउ विल टॉक अबाउट ऑप्शनल साइड आल्सो, एज आई मेंशन कि एक दिन में दोनों चीजें चलनी है, ऑप्शनल और वो GS दोनों चलना है. So आपके ऑप्शनल की साइड क्या हो रहा होगा? बाय दिस टाइम यू मस्ट हैव मेड नोट्स ऑफ ऑप्शनल, वो भी आपको दिसंबर तक चलाना है कि उसके आपके नोट्स बनते रहें. बट आई विल सजेस्ट समथिंग एल्स आल्सो इन विद रिगार्ड टू ऑप्शनल. ऑप्शनल टेस्ट सीरीज बिकम्स इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इसके बाद आपको ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज लेने का टाइम नहीं मिलेगा. यू विल डायरेक्टली राइट प्री और मेंस के बीच में. तो अगर आपको एक बार टेस्ट सीरीज लिखनी है, सो ये जो अगस्त से दिसंबर वाला टाइम है, you can prepare your syllabus, optional के आप नोट्स बना रहे हो, at the same time you can take some test series और उसके साथ आप उसके टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो. मतलब क्योंकि जो टेस्ट होते हैं वो पार्ट टेस्ट होते हैं ऑप्शनल के, तो वो पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट करके आपने उसका पार्ट टेस्ट लिख दिया, यू विल रियलाइज योर मिस्टेक्स की क्या कमी है मेरे नोट्स में. तो यू विल हैव टाइम टिल जनवरी और फरवरी जब तक आप वो नोट्स इंप्रूव कर सकते हो, अदरवाइज वो टाइम नहीं होगा उसके बाद. एंड नोट इट डाउन, टेस्ट लिखना इज ऑफ utmost important. You can keep on reading your content. If you're not able to write it in your exam, there's no meaning of interacting with it. So आपको जो सर टेस्ट दे रहे हैं या फिर आप जब भी टेस्ट लिख रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट लिखा हुआ है इसमें भी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, आप वो सेक्शनल टेस्ट साथ साथ देना शुरू करो. फॉर एग्जांपल आई हैव कवर्ड टॉपिक 1 2 3 चैप्टर कर लिया, अभी उसके नोट्स को मैं रिवाइज कर करके उसके आंसर लिखना शुरू करूंगा. नाउ दैट आंसर राइटिंग इन योर PYQs will in your test copies will also help you remember that stuff again and revise that stuff again, and you'll get to realize कि मुझे क्या याद है क्या याद नहीं है by testing yourself there. So ये phase 2 में आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं. I think both of us concur with it कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक आंसर को you keep on making it perfect, because there is nothing like a perfect answer. So आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले बनाना आना चाहिए. Do not limit your time कि मुझे 7 मिनट में लिखना है या मुझे 10 मिनट में लिखना है initially. For that initial 1-2 weeks, write an answer, get it evaluated by your mentor, get your structure right. Once your structure is right, then start writing this sectional test, जिसमें at least 10 questions you are writing in a stipulated amount of time. Because आपको वो जो हीट है ना आंसर राइटिंग की, वो तभी रियलाइज होती है जब आप एक्चुअली 10-12 क्वेश्चन लिखते हो उस टाइम में. एक क्वेश्चन लिखने में नहीं होती, बिकॉज your hand works as fast as it can. You can write one answer in
6 minutes, but when you have to write 10 answers, then on an average आपका एक आंसर 6 मिनट में नहीं लिखेगा, because it's humanly not possible to write that fast. So you should always keep this test series is very important in your phase 2 with Dwij has talked about. One more thing I would like to add here is कि जो optional है, optional में PYQ writing is very important. So when you are studying, for example, if you are studying a particular portion of particular subject, that is whatever your optional is, then you should write PYQs of that subject, that particular portion, because that will help you know what type of content is helping you, what type of content you are not able to articulate in the examination hall. और पीवाईक्यू में दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक करंट अफेयर्स होगा. फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग 2014 का पेपर, अब उसमें कुछ 2014 में कुछ हुआ होगा जो करंट अफेयर्स बेस पे आया होगा, दैट मे नॉट बी रेलेवेंट फॉर यू, बट देयर इज सम द ह्यूज पोर्शन ऑफ मेंस इज स्टैटिक. आप जब देखोगे पेपर्स को, इतना करंट अफेयर्स बेस नहीं आता है, स्टैटिक बहुत ज्यादा आता है. ज्योग्राफी कभी चेंज नहीं होगी इतने कम टाइम पीरियड में, एक डिकेड में ज्योग्राफी नहीं चेंज होगी. सो यू कैन रीड योर ज्योग्राफी, यू कैन अटेम्प्ट ऑल द ज्योग्राफी पीवाईक्यूज बिकॉज दो द स्टैटिक पार्ट्स. यू कैन स्किप द करंट अफेयर्स पोर्शन of 2014, 12 or something, but static remains the same. So you actually can practice those static questions, which will help you learn your static part better. अब इसमें एक डाउट होता है सबका कि व्हाट अबाउट द टेस्ट सीरीज. इसमें टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का भी फेज यहाँ पे ऐड हो जाता है. सो फ्रॉम व्हाट माय एडवाइस वुड बी कि जब आप सितंबर में आ रहे हो, सो बाय द टाइम यू आर एंटरिंग सितंबर, आपके 4-5 महीने प्रिपरेशन के हो गए हैं और आपने स्टैंडर्ड बुक्स भी लगभग कवर कर लिए हैं, तो स्टार्ट गिविंग सेक्शनल टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स. तो वो सेक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपने अगर ज्योग्राफी कवर कर लिया है, 2-3 रीडिंग मार लिया है, तो अब तो देना बनता है 2 रीडिंग के बाद. तो एक टेस्ट दो, एनालाइज योरसेल्फ, फिर से पढ़ो. तो उस टाइप से आप पार्ट टेस्ट वहां से प्रीलिम्स के शुरू कर सकते हो. ये नहीं है कि आपको एक साथ सारे देने हैं, बट जो सब्जेक्ट होते जा रहे हैं एटलीस्ट गिव 1-2 टेस्ट. तो पार्ट टेस्ट में भी ना 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है बेसिक्स वाला, एक होता है एडवांस वाला. एटलीस्ट गिव द बेसिक वन. फाइनल वेट मत करो कि हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो बेसिक वाला होता है वो तो दे दो, फिर एनालाइज इट, फिर उसके बाद एडवांस वाला बाद में दे देना. तो गो लाइक दैट, क्योंकि पार्ट टेस्ट में 2 वो होते हैं, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट पे हम लोग. This process is like a very slow improvement process. Be patient. आप पहला टेस्ट लिखोगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे. डोंट एक्सपेक्ट आप पहले टेस्ट में 200 में से 150 नंबर ले आओगे, ऐसा नहीं होता है. इट विल टेक टाइम. Keep attempting tests. Don't get sad by not scoring well in some tests in the beginning. It takes time. This improvement in some takes of time. the tests, even in basics, I used to get 40-45 Yes, marks 40 in the marks, starting. 50 marks, 60 So, marks. Everyone go through the same process. ठीक है, तो वो कोई नहीं करना तो है. ये नवंबर दिसंबर के अराउंड हम लोग आ गए, राइट? अराउंड सो वी आर अराउंड नवंबर दिसंबर, और यहाँ पे आपका प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज आपने लगभग स्टार्ट कर दिए, बीच में टेस्ट आप देख सकते हो, ऑप्शनल के टेस्ट आप लिख ही रहे हो, और मेंस तो आपकी आंसर राइटिंग चली रही है डेली 4-5 क्वेश्चन या जैसे भी आपको. और इसमें अगर आपको एक दिन डिवाइड करना है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट फेज 2, यू शुड नो व्हाट इज योर प्राइमरी सब्जेक्ट राइट नाउ एंड व्हाट इज सेकेंडरी सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल प्राइमरी, अगर मैं ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था, सो इफ आई एम रीडिंग एंथ्रोपोलॉजी एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट राइट नाउ इन दिस वीक, देन आई विल बी गिविंग इट 4 to 5 hours इन अ डे. उसके अलावा मैं उससे बोर हो जाऊंगा, सो आई विल हैव अ सेकेंडरी सब्जेक्ट, प्रोबेबली जीएस का सब्जेक्ट है पॉलिटी, आई विल बी रीडिंग इट 2 to 3 hours अ डे. ठीक है, अब वो 4-5 घंटे में मेरा सब्जेक्ट रीड भी कर रहा हूँ मैं, शायद आंसर भी लिख रहा हूँ उसके, बट डिवाइड डे इन सॉर्ट ऑफ अ प्राइमरी टॉपिक टू स्टडी या सेकेंडरी टॉपिक टू स्टडी, एंड यू कैन ऑलवेज इंटरचेंज दीज. अगर आपको पॉलिटी स्ट्रॉन्ग करना है, पॉलिटी को प्राइमरी में डाल दो. आपको सिर्फ ऑप्शन रिवाइज करना है, उसको सेकेंडरी में डाल दो. सो मेजोरिटी ऑफ द टाइम दैट यू गिविंग टू एनी सब्जेक्ट इन अ डे, आप प्राइमरी सब्जेक्ट को दो. सेकेंडरी सब्जेक्ट यू कैन ऑलवेज रीड आफ्टर इट, बट मेक श्योर एटलीस्ट 2 डिफरेंट चीज आप एक दिन में पढ़ रहे हो. अब नवंबर दिसंबर का जो टाइम आ जाता है, दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत चीजें हमारी बची होती हैं. जीएस में कुछ छूट जाता है, ऑप्शनल में कुछ छूट जाता है, और टेस्ट सीरीज का प्रेशर अलग से होता है, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है, मेंस की भी टेस्ट सीरीज पूरी नहीं हुई होती है. तो उस टाइम पे बहुत प्रेशर नहीं लेना होता है. उस टाइम पे क्या करना होता है ना, कि आपको प्रायोरिटाइज करना होता है. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन डू बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस का जो 3 महीने का टाइम होता है. सो पहले तो प्रायोरिटाइज करो. इट्स ऑल अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट, कि अपनी एनर्जी कैसे मैनेज करो. टाइम मैनेजमेंट इज वन पार्ट ऑफ दैट एनर्जी मैनेजमेंट, सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज दैट. तो आप कुछ चीजों को वहां डाल सकते हो कि कुछ टॉपिक्स में तब कवर कर लूंगा, बट हियर द थिंग इज कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, एसए एंड एथिक्स. तो असद विल डिस्कस कि एसए एथिक्स की क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि नाउ वी आर इन नवंबर. तो अगर आपने अभी तक एसए एथिक्स में नहीं, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है कि पहले जीएस कर लेते हैं, एसए एथिक्स छूट जाते हैं, तो बट नाउ इज द टाइम, नवंबर दिसंबर इज द टाइम कि जब इनको पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है. सो या अब I क्या होगा want ना. to यस मैम. clear कि
ऐसे और एथिक्स में सिंस आई हैव बीन मीटिंग एस्पिरेंट्स, वो लोग भी मुझे बताते हैं कि ऐसे और एथिक्स अभी तक उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया होता बाय दिसंबर। सो वो सोचते हैं कि प्रीलिम्स करने के बाद दिल डू इट, दिल कवर एथिक्स लेटर। So I really wanted you to focus on both these aspects, and as Dwij also told that Asad will be taking up the essay portion and you will be taking the ethics portion. सो बेसिकली क्या है मैम, अगर आप अभी तक लाइक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपने नहीं करा है, इट्स ओके, बिकॉज आप कोई सब्जेक्ट पहले करोगे, कोई सब्जेक्ट बाद में करोगे, बट डोंट लीव इट कंप्लीटली आफ्टर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बाद आपके पास टाइम होना है चीजों को अच्छे से याद करने का और अप्लाई करने का टेस्ट सीरीज में, दैट्स ऑल। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे उस टाइम में, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ एटलीस्ट नाइन डिफरेंट पेपर्स देयर। सो नवंबर दिसंबर आया, आई विल फर्स्ट सिंपली टेल ऐसे का क्या था एंड हाउ इंपॉर्टेंट दीज आर। अगर एथिक्स और ऐसे में मेरे मार्क्स नहीं आते इस साल, सो आई वुडंट हैव प्रोबेबली नॉट इन, आई वुड हैव बीन आउट ऑफ द लिस्ट, और इधर मुझे अपना इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं मिलता। सो इट्स दैट इंपॉर्टेंट, बट पीपल टेंड टू इग्नोर इट। ऐसे के लिए क्या करना है, ऐसे के लिए सिंगल पॉइंट मैं आई वुड लाइक टू से कि देयर इज नथिंग दैट यू कैन स्टडी, यू हैव टू apply whatever you are studying in your GS subject, in your newspapers, etc. in your essay writing. First point ये है। Second point ये है कि आप अपनी यूपीएससी की तैयारी के अलावा भी give an half an hour or something about towards reading some different book. मतलब that can be an international book, that can be fiction, that can be anything that you like to read during the preparation right from the very beginning, so that आपके पास वो fodder ना इकट्ठा होता रहता है ऐसे। And if you feel something that is relevant, some quote, some anecdote that you can use in your essay, तो आप उसको एक जगह पे इकट्ठा करते रहो in the form of a digital note. That's what I did. Apart from that, second क्या सोर्स होता है ऐसे की पढ़ाई के लिए? There are different books like, for example, there's a book called 50 Greatest Essays of All Times. इस जिसमें आपको 50 greatest essays from all the time written by major personalities वो compilation दे रखा है। आप वो ऐसे पढ़ो, see how people are expressing their own views and why is that essay a part of 50 greatest essays of all time. Then there are books on, for example, ethics को आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो essay writing में भी, ठीक है। There's another book जिसमें आपको philosophy का, I've written it on my Telegram channel if you want, I am forgetting its name right now, आपको सारे schools of philosophy का एक gist दे रखा है। So ऐसे में आप, क्योंकि philosophical topics बहुत सारे आ रहे हैं, you can refer to that book and get content from that. It's on my Telegram channel, you can check it. इसके अलावा आपको sources clear हो गया। फोर्थ और मेन पार्ट ये है राइटिंग एन एसे। सो व्हेन यू आर इनटू योर फेज 2 ऑफ प्रिपरेशन, दैट आपने बेसिक बुक्स पढ़ ली है, स्टैंडर्ड बुक्स रीड कर ली हैं, नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग एसेज। सो आई वुड रिकमेंड हर वीकेंड आप एटलीस्ट एक ऐसे लिख रहे हो 1.5 घंटे में, and keep this process going on for the entire preparation till you write your essay paper, and believe me, this will create a huge effect on your answers, on your marks, because write one essay every week, get it evaluated and marked by your mentor. वो स्लो इंप्रूवमेंट प्रोसेस होता है। देन गो टू टॉपर्स, जिनके अच्छे ऐसे में मार्क्स आए, उनके एसेस पढ़ो, देखो वो क्या किस तरह से ऐसे लिख रहे हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे, एनेक्डोट कहाँ पर है, बॉडी कहाँ पर कैसे लिख रहे हैं, कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, और उनमें से कुछ अपने जो लर्निंग्स हैं उनको एक नोट्स की फॉर्म में कंपाइल कर लो। So all of this, cut and paste approach, and then applying it in writing one essay at least every week is something that is very important. Now, Dwij will tell you something about ethics. So in ethics, what I'll divide it into 2-3 parts. So the first part is just ethics का static portion है. So what you can do, as I mentioned for the GS also, take some standard source या कोई भी source, whichever you like, and there are certain definitions or पूरे, suppose there is a topic good governance या ethical governance. So write 2 pages on that, कुछ डायग्राम्स इंक्लूड कर लो। तो ऐसे करके आप उसका डॉक्यूमेंट पूरा कंपाइल कर लोगे, जो कि स्टैटिक पार्ट है। कंपाइल दैट एंड लर्न इट। फिर उसमें ना वैल्यू एडिशन वाला कंपोनेंट एक ऐड होता है। फॉर वैल्यू एडिशन कंपोनेंट यू कैन ऐड एग्जांपल्स, केस स्टडीज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो वो आपको क्या है कि एक बार आपने बेसिक कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, तो उसके बाद आप एक दो कंटेंट डिफरेंट कोचिंग के या टॉपर नोट्स से निकाल के आप उसमें डाल सकते हो, क्योंकि कंटेंट लगभग सेम सा ही घूमता रहता है। तो आप उसमें जाके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो स्टैटिक पार्ट के। सेकंड थिंग इज केस स्टडी पार्ट। केस स्टडी पार्ट के देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस। आई विल सजेस्ट कि कम से कम 15-20 टॉपर कॉपीज उठाओ डिफरेंट टॉपर्स की एंड रीड देम। जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि उनके केस स्टडी की क्या अप्रोचेस है, हाउ दे इंट्रोड्यूस द केस स्टडी, क्या स्ट्रक्चर रहता है, एंड हाउ दे क्लोज इट। फाइनल एक फिलोसफिकल एंगल डाल के केस स्टडी को कैसे क्लोज किया जाता है और कैसे एक बैलेंसिंग सॉल्यूशन निकाला जाता है।
सो डू दैट। तो उससे आपके 2 पार्ट कवर हो जाएंगे। द थर्ड पार्ट इज जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है विच आई हैव फाउंड इन द यूपीएससी जर्नीज, कि एथिक्स को लिखना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ लोगों को लगता है कि एथिक्स को लिखना बहुत डिफिकल्ट इसलिए रहता है क्योंकि ना तो वो ऑप्शनल के जैसा लिखा रहता है बहुत ही मैकेनिकल और ऑब्जेक्टिव वे में, ना वो जीएस जैसा लिखा रहता है। यू हैव टू बी फिलोसफिकल, यू हैव टू राइट वैल्यूज, यू हैव टू गिव सम इमोशनल टच टू योर आंसर। तो वो लिखने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। मुझे लगता है कि जितनी आंसर राइटिंग मैंने जीएस 1 2 3 में की है उससे ज्यादा जीएस 4 में की है। एंड 4 इज द लेंथीएस्ट पेपर, सो आपको वहां करना जरूरी है प्रैक्टिस। सो उसमें ना जितने PYQs हैं, आई सजेस्ट, सो व्हाट वी डिड कि हम 3 दोस्त, मैं, असद एंड शुभतोष, वी 3 सेट टुगेदर, और हमने जितने भी एथिक्स के PYQs थे अराउंड 120 130 फॉर पास्ट 10 इयर्स, वी प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट। तो हमने ऑनलाइन बैठ के वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट पे करा था, और हमने वो 120 130 क्वेश्चंस सारे लिख लिए थे। तो उससे 2 चीजें हुई, एक तो हमारा कंटेंट बिल्ड हो गया, वी गोट टू नो डिफरेंट एग्जांपल्स, केस स्टडीज, वो हमने सब उसमें इंक्लूड कर लिए। सो फाइनल टाइम में हम कुछ रिवाइज कर नहीं करते थे, केवल वो डॉक्यूमेंट रिवाइज करते थे, ओनली दैट डॉक्यूमेंट। और क्या होता है कि थीम्स ना सेम रहती हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज वन चैप्टर ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, बट यू हैव टू राइट अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रिलेटेड थिंग्स, हाउ इट्स गेटिंग रिलेटेड टू एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सब क्लैरिटी रहती है माइंड में, एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है, कंटेंट बिल्ड हो जाता है। और हमने ये किया था कि हर टॉपिक को ना हम 3 लोग बैठ के हर टॉपिक की अलग डायमेंशन हमने ढूंढी थी। फॉर एग्जांपल अगर कंपैशन है तो उसकी इन्वायरमेंटल डायमेंशन में कंपैशन क्या है, गवर्नेंस डायमेंशन में कंपैशन क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या है, ठीक है। इस तरह से हमने अपने बहुत सारे डायमेंशन बनाए थे। सो एग्जाम में किसी एक डायमेंशन से क्वेश्चन आता है, they'll give you a statement which will be about, for example, environment, and then they'll say comment on it with respect to compassion, for example. So हमने वो already ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में कवर कर रखा था, उसके ऊपर एग्जांपल्स हमने डाल के रखे थे। एंड व्हेन 2 3 पीपल कंबाइन, दे आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ डॉक्यूमेंट, 3 डिफरेंट experiences, 3 different reading sources, they all come together at one place. So you are divide and rule वाला नहीं है ये वो वाला होता है कि unite and conquer. So we actually united, and believe me, I think all 3 of us have more than 115 marks in ethics, right? We have scored more than 115. So this is a foolproof strategy that we have made कि आप हर टॉपिक को ये करो, आपके PYQ उठाओ, बेसिक कंटेंट लिखो, हर वैल्यू की अलग डायमेंशन को एक्सप्लोर करो, उसके अंदर एग्जांपल्स और कोटेशंस को लिख के एक डॉक्यूमेंट बना के साइड में रखो उसको, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। राइट। तो आई थिंक नवंबर दिसंबर में आपका एक कवर हो जाता है, प्लस कीप रिवाइजिंग जो भी आपका जीएस का या ओएनथ्रो का कंटेंट है। दिस इज द मंथ कि जहां आप रिवाइज कर सकते हो और वैल्यू एडिशन कर सकते हो। नेक्स्ट फेज में जल्दी से नाउ वी आर इन फेज 3। इज देयर एनी Here I क्वेश्चन? would like to ask one thing which students generally face issue in. It's that कि उनका जीएस मेंस का कंटेंट रेडी होता है, बट उनको हमेशा एक फियर रहता है कि उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करें, उसमें एक पर्टिकुलर उनका डेटा बैंक बनाना चाहिए कि नहीं, कौन से स्कीम को कहाँ डालना है, कैसे उसका नोट बनाना है। तो हाउ डिड यू डू दैट? मैम मुझे लगता है कि जब वो आंसर राइटिंग वाला फेज स्टार्ट होता है ना सितंबर अक्टूबर से, प्रोसेस है, तो वो एज वी राइट आंसर्स ना तो हमारी रीडिंग इंप्रूव होती है, और एज वी रीड तो हमारी आंसर राइटिंग इंप्रूव होती है। तो वो दोनों प्रोसेस में इंटर रिलेटेड है। तो जैसे आप आंसर्स लिखते रहते हो, फिर आप कुछ पढ़ते हो, देन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग, अच्छा दिस इज इंपॉर्टेंट व्हिच आई कैन इंक्लूड माय आंसर, देन यू नोट इट डाउन इन योर नोट्स। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम आपके आंसर्स में यूज हो जाएगा। टेस्ट सीरीज इज फॉर दैट ओनली कि आप टेस्ट सीरीज केवल देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टेस्ट सीरीज दे दी, देन आपने 3 घंटे का टेस्ट लिखा, उसके बाद आप उसके सॉल्यूशन या आंसर अगर अवेलेबल है उठा के देखो, उनको नोट करो। जैसे फॉर पॉलिटी आई कैन डेफिनेटली से कि मुझे उसका फायदा हुआ, आई गॉट गुड मार्क्स। तो पॉलिटी में क्या होता था कि इफ देयर इज समथिंग अबाउट फेडरलिज्म और मैंने उसका आंसर लिखा, आई हैव सबमिटेड इट, उसके बाद मैं उसके सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ, तो आई गोट टू नो लॉट मेनी पॉइंट्स कि फेडरलिज्म में ये भी लिख सकते थे, ये आर्टिकल भी डाल सकते थे। सो मेक नोट ऑफ इट। तो आपके पास वो थीमेटिक वाले कंटेंट क्रिएट हो जाएगा कि अगर नेक्स्ट टाइम फेडरलिज्म का क्वेश्चन आएगा, यू विल हैव 2 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आप पिछली बार नहीं लिखे थे। So this is how you improve your answers और कंटेंट। और नवंबर दिसंबर का जो टाइम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे आप ये वैल्यू एडिशन वाला काम बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका लगभग सिलेबस हो गया होता है, कुछ कुछ मेजर पार्ट बचे होते हैं, बट तब आपको एक्चुअल पता चल गया होता है आंसर राइटिंग के बाद कि व्हाट डू यू रिक्वायर, व्हाट डू यू नीड। बेसिक जो डेटा है वो आपके पास होता है, बट लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ डेटा है वो आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जब वो कंपाइलेशंस आते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ डेटा वहां से आता है। इतना स्ट्रेस नहीं करना चाहिए मुझे लगता है वैल्यू एडिशन में। इनिशियली आप पहले स्टैटिक को पढ़ो,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको केस स्टडीज एग्जांपल मिलते हैं, उनको आप एक ई नोट बनाओ जिसमें जीएस 1 2 3 4 अलग अलग टॉपिक, दो सोशल जस्टिस लिख दिया, इंटरनेशनल रिलेशन लिख दिया, उसमें ये टॉपिक्स और केस स्टडीज आप डालते रहो न्यूज़पेपर से पढ़ पढ़ के। दैट्स व्हाट आई डिड। टुवर्ड्स द एंड जब प्रीलिम्स मेंस के बीच में कंपैरिजन आएंगे, आपके पास पूरी डेटा शीट आएगी सोशल जस्टिस की, पॉवर्टी बिगर सब कुछ उसमें दे रखा हुआ कंपैरिजन में। सो डू नॉट स्ट्रेस दैट मच, डेटा बैंक बना बनाया आता है। Okay. And there's one more thing that कुछ मेंस में कुछ छोटे टॉपिक्स होते हैं which are not which are equally important, which is the internal security, international relations, if we talk about the disaster management, तो उनसे भी कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सोसाइटी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो हाउ टू डील विद देम मैम those मुझे topics, लगता है because कि जैसे sometimes we tend to skip these topics, या कुछ ऐसा होता है कि वो निकल जाते हैं, हम लोग मेन टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, तो ये सब चीजें रह जाती हैं, तो हाउ टू लाइक मेक नोट्स ऑफ देम आल्सो। मुझे लगता है कि यही मेन टॉपिक्स हैं और एडिशनल टॉपिक्स कुछ और नहीं है क्योंकि इफ वी सी द मार्क्स स्ट्रक्चर तो इंटरनल सिक्योरिटी कैरीज 50 मार्क्स, इंटरनेशनल रिलेशंस कैरीज 50 मार्क्स, तो आई विल कंसीडर दिस इज अ बिग चंक और वहां पे इंप्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। If I talk about internal security, syllabus is very well defined. Left wing extremism, money laundering, हर साल everything is सेम क्वेश्चन mentioned. आते हर हैं, साल साइबर सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दिस सेम क्वेश्चन है, कंटेंट मोर और लेस सेम है। तो जस्ट प्रिपेयर, हर टॉपिक पे 2 3 पेज के इसको नोट्स बना लेना है। उसके बाद जब करंट अफेयर मैगजीन आएगी प्रीलिम मेंस के बीच में, उसको स्किम कर लो, उसमें डेटा निकालना है निकाल लो, कुछ नया ग्राफ आ गया निकाल लो, अदरवाइज कि बहुत ज्यादा चेंज होता नहीं है स्टैटिक पार्ट में। नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सेम ही है। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है कि कंटेंट थोड़ा चेंज हो जाता है, उसमें क्या करना होता है कि स्टैटिक चीजें सेम ही रहती हैं। इफ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन ना, तो 30 मार्क्स का हर बार स्टैटिक आता है, जो मतलब स्टेटिकल से कंटेम्प्रेरी जो है, जो पिछले 5 6 साल से चल रहा है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो एकदम ही करंट रिलेटेड होते हैं कि क्वाड में कुछ हो गया या कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हो गई। तो मुझे लगता है कि अभी पहले 30 मार्क्स पे फोकस करना चाहिए, पहले वो बिल्ड करो, और जो न्यू डेवलपमेंट होगा वो भी कहीं ना कहीं स्टेटिक के कंटेम्प्रेरी से रिलेटेड होगा जो भी आएगा। सो यू मस्ट नो द स्टेटिक थिंग, और उसके नोट्स बनाना, चाहे एवर नोट पे बनाओ, वन नोट पे बनाओ, क्योंकि इंटरनेशनल अपडेट होता रहता है, तो नोट्स बनाना वैसे जरूरी है। तो वो बहुत जरूरी रहता है। उसके बाद जब वो मे 65 आएगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, वो 1 2 दिन देके आप कवर कर सकते हो, उसमें ज्यादा इशू क्रिएट नहीं होता है। Okay, one thing that we somewhere have missed here is CSAT. Like CSAT में, because prelims की preparation के time पे अगर those who are not good with maths, जिसको लगता है, because अभी हम देख रहे हैं कि कुछ trend change हो रहा है, CSAT का थोड़ा difficulty level, I would not say the difficulty level, but कुछ ज्यादा analytical हो रहा है और ऐसा, तो how did you prepare for CSAT? And I know that you've cleared CSAT multiple times, so how was the strategy for CSAT? मैम CSAT एक्चुअली इनिशियली आई ऑनेस्टली टेल यू फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में it was relatively easy to clear it because of the background that we had, that was a engineering background जिसमें हम logic और ये सब already पढ़ के रखते हैं, so we scored really well there. But as I saw in my this attempt, paper got increasingly tough, so I scored relatively less but still managed to clear it comfortably. उसका रीजन ये था कि what I see is कि CSAT को आपको डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल इट हैज मैथ्स, इट हैज लॉजिकल रीजनिंग, इट हैज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, ये 3 इसके मेजर पार्ट हैं, इनके अंदर ऑल छोटे छोटे पार्ट्स हैं। व्हाट आई स्ट्रेस अपॉन कंटिन्यूअसली इज कि आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ो। इफ यू आर समवन जिसका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, गो टू यूट्यूब, हर टॉपिक पे लोगों ने कैट की तैयारी की जो चैनल्स होते हैं, उन्होंने हर टॉपिक पे डिटेल वीडियोस बना के रखे हैं, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। इफ यू आर समवन टेकिंग, यू नीड कोचिंग और असिस्टेंस, प्लीज गो अहेड एंड टेक इट। डू नॉट बी conservative about it, because this is not something that you can always learn for yourself. This is a little bit, कोई समझाए आके, कोई बिठाए फॉर्मूला शीट से, तब आराम से हो जाता है। तो हर तीनों सेक्शन को इक्वल वेटेज देना है, आरसी को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, लॉजिक को, मैथ्स को, इन प्रिपरेशन एज वेल एज इन द एग्जाम, फाइनल एग्जाम। एंड प्रैक्टिस के लिए आई वुड से मॉक टेस्ट कम करो, बिकॉज कभी कभी मॉक टेस्ट बहुत टफ बना दिए जाते हैं। ऑलवेज रिलाई ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर सीसैट। आप अगर वो भी सारे लाके जा रहे हो ना, तो आपको कंफर्टेबली सीसैट निकलेगा। ऑलवेज रिमेंबर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर आप तीनों पार्ट को इक्वल वेटेज दे रहे हो, तीनों पार्ट को एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हो। You're attempting like 55 something questions, so that can comfortably get you over it, but you have to study and practice previous year questions. एंड व्हाट यू कैन डू कि जनवरी से जब आप स्टार्ट करोगे, फेज 3 में एंटर करोगे, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इन द लास्ट 2 मंथ्स, वो आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो कि आप हर संडे 2 घंटे बैठ के सीसेट का पेपर दे रहे हो। Correct. एक पीवाईक्यू, सपोज यू आर स्टार्टेड फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स, तो हर संडे बैठ के एक
टाइम बाउंड लिमिट में, क्योंकि जो सीसैट के साथ इशू क्रिएट ये हो रहा है कि दे आर अनेबल टू कंप्लीट द पेपर, पूरा पेपर ही सामने टफ कंप्लीट। सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप वो 2 घंटे में सही क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन से मैथ्स में भी देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि बहुत टफ है और एक है इजी वंस जो लॉजिक से हो जा रहे हैं। सो आइडेंटिफाई करना वो क्वेश्चंस को एंड तक कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से एरियाज हैं जहां से मैं कर सकता हूँ, वो एरियाज आइडेंटिफाई करो। स्पेशली फॉर इंजीनियर्स कुछ भी चीज दिल से नहीं लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो हम दिल से ले लेते हैं, अरे ये हुआ कैसे नहीं, इसमें फॉर्मूला उस पर अटके रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। एक रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हमें 45 50 जितना भी हमारे एक लिमिट है वो कर लेना है, उतने क्वेश्चंस नंबर अटेम्प्ट करने हैं। एंड वी हैव टू अटेम्प्ट बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश, तो आधा टाइम मैथ्स को और आधा टाइम इंग्लिश को। इंग्लिश में भी लोग बोलते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स में ना बहुत अनसर्टेनिटी होती है, गलत होने के चांसेस रहते हैं, सो आई एग्री विद दैट। लेकिन उसमें कॉम्प्रिहेंशन में ना देयर आर सर्टेन पैराग्राफ्स वो छोटे होते हैं, बहुत इजी टाइप के होते हैं। सो द बेसिक स्किल व्हिच यू नीड नाउ इन सीसेट इज कि बहुत ही टारगेटेड और बहुत ही स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए, बस कि ये क्वेश्चन मेरे लिए है, ये मुझे करना है, आई कैन डू इट, और 2 घंटे में उसको खत्म करके निकल जाना है। आई जस्ट क्विकली समराइज हम इसके एंड में क्या होने वाला है। सो जनवरी फरवरी के ऑनवर्ड्स व्हेन आप यहाँ आ चुके हैं, आपको प्रीलिम्स की डेडिकेटेडली तैयारी शुरू करनी है और आपको फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करने हैं प्रीलिम्स के। सो आपका कंटेंट हो चुका है, नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली रिवाइजिंग। आप अपने ऑप्शनल को ना सेकेंडरी फेज में डाल दो, अपने जीएस को स्पेसिफिकली अपने बेसिक सोर्सेज और प्रीलिम स्पेसिफिक जीएस को अपने मेन उसमें ले आओ। Now you are reading and revising this content constantly, and every Sunday or every some day of a week you're writing one test. और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने बहुत ज्यादा टाइम है आपको हर चीज 2-3 बार रिवाइज करके टेस्ट लिखने का। ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल से लेकर के फुल लेंथ तक पूरे दो टेस्ट को दो, उसके बाद उसके सोल्यूशंस को पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आपका एबीसीडी में से आपको अगर बी ऑप्शन आता है तो आपको जरूरी नहीं है कि ए सी और डी के बारे में सब पता है। टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन में आपको एबीसीडी चारों ऑप्शन के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कल को किसी एक ऑप्शन पे क्वेश्चन बन के आ सकता है प्रीलिम्स में, इफ यू हैव नॉट रेड द सॉल्यूशंस यू विल सफर अल्टीमेटली। सो हेल्प, मतलब टेस्ट सीरीज के जो सोल्यूशन है उनकी हेल्प लेके अपना बेसिक नॉलेज को और इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सो आप टेस्ट सीरीज 1 से लेकर के फॉर एग्जाम्पल 40 तक दे रहे हो with your revision of your basic content, और उसके बाद उसके solution भी पढ़ रहे हो, this will equip you well enough to go and sit in the paper. See, nothing can guarantee your selection in prelims. Even if I write today, if Dwij write today, we can fail. Anyone who clears this exam can always fail in prelims, cannot guarantee, but you can increase your chances by doing what we are actually trying to tell you. कि इस तरह से आप तैयारी करो, इस तरह से आप नोट्स पढ़ो, इस तरह से आप टेस्ट सीरीज दो, उनके सॉल्यूशंस पढ़ लो। एंड नाउ यू हैव फाइनली रिटन द मेंस, सो आई थिंक लास्ट पेज विल क्विकली टेल कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए। So I think we'll discuss till prelims only here. हाँ, but prelims और mains के बीच में we can meet again and we can discuss. Because it's a whole new. It's a But whole all new thing is that you have to just revise your content, notes revise करो और आंसर राइटिंग को करके मेंस की टेस्ट सीरीज को एंकर बना के और फैब मिड तक आप अपना मेंस का कंप्लीट जाना चाहिए, जो भी आपके नोट्स हैं वो कंप्लीट जाने चाहिए, और वहां से फैब के मिड से आप बिल्कुल एकदम प्रीलिम्स मोड में आ जाते हो। और प्रीलिम्स क्योंकि आपको सीसेट भी देखना है इक्वली, और आई थिंक मई में एग्जाम होता है, सो यू विल गेट गुड टाइम। मैम कैन वी टेक सम क्वेश्चन, बिकॉज़ ऑलरेडी 1 आवर होने वाला है एंड आई थिंक क्वेश्चंस बहुत रह जाएंगे, सो कुछ डाउट उससे भी क्लियर हो जाएंगे। इफ यू कैन टेक सम क्वेश्चन इट विल रियली हेल्प अस। So now you can ask your questions. आपके जो डाउट्स हैं अभी तक जितने भी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी सर ने डिस्कस की है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। मैम भी कुछ क्वेश्चंस में डाले हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन व्हिच वी थिंक वी हैव नॉट डिस्कस्ड एंड आर रेलेवेंट इनफ टू आंसर हियर, we'll immediately answer. When to start answer writing PYQs, we have answered. How to practice PYQ mock paper done. Then did you expect your mains you'll be having score of 315 of in anthropology? No, I didn't. I targeted for 290 or 300. I targeted for 290. But I got extra 15-20 marks are God's gift. Yeah, you can never predict it, यार. It's a subjective thing, and you can actually never evaluate आपने कैसा किया एग्जाम में. Just try to do your best, and that's all. ऐसा तो नहीं है, कुछ बोलते हैं कि हैंडराइटिंग का क्या रोल होता है, तो हैंडराइटिंग का भी कुछ रोल रहता है। ये बिगनर ये सोचेंगे, आई थिंक हम लेजिबल होना चाहिए आंसर। अगर लेजिबल नहीं है तो यू विल सफर बिकॉज यू विल हैव अ टफ टाइम। और मैंने ये तक सुना है कि पीपल एक्चुअली यूज ऑल देयर विड्स एंड लेंसेज इवन टू सी के बच्चे ने लिखा क्या है। इतने अच्छे चेक होती है कॉपीज यूपीएससी में,
So अगर आप उतना एफर्ट आप उससे डलवाओगे तो आप बी एश्योर दैट यू विल नॉट गेट अ गुड मार्क, बिकॉज उतना परेशान कर रहे हो उसको जस्ट टू अंडरस्टैंड के बच्चे ने लिखा क्या है. सो इट्स गोइंग टू affect your marks. Legibility सही रहेगी, सुंदर राइटिंग होनी चाहिए. It's not something that should be there. Essay में at least your copy should be neat and clean and beautiful. GS classes we have done this. Mains we have discussed, mains, data bank we have discussed. Data bank done. Okay. Also data bank आपको चाहिए यार, you can refer to one of our Telegram channels पे data bank पूरा डाल के रखा है, स्कैन करके हम लोगों ने अपना काम थोड़ा, but I think that data would be outdated now. We have discussed about answer writing. Yeah. Okay. Answer writing discussed. Self notes making UPSC. What to do? How to add value addition. We have talked about it. Or if you are taking classes of anthropology somewhere, or whatever subject, आप उनको stick करो. Ask your mentors these questions. They'll be able to tell you better, because we can tell anthropology specific value addition that was largely based on Karandeep Sir's classes only for us. So mentors really help in at least subject option subject के preparation. Yeah, did we know that we'll score outstanding? We completed our papers. ठीक है, we were confident enough that we could reproduce what we could in that paper, and we had written a lot of tests, and we were scoring fine in tests यहाँ पे. So we were like थोड़ा बहुत तो था confidence कि ठीक ठाक number आ जाएंगे. You can be confident about it. Subtopics done. Yeah, please. एक बंदा एक question पूछो. It's a lot of spam. I'm not able to understand. Make newspaper notes. We've talked about it already. कल रिजल्ट आ रहा है. All the very best. Tomorrow, yeah, it's a result day. A lot of our friends have also given the paper, so we are also expecting and excited. Yes, मैंने सुना है IAS all the best बोले तो 60% chance of selection का. What is this यार? All the best. Really, all the best, sir. I hope you get your desired service. I hope you clear everyone who has given the paper. But ये 60% का figure कैसे आया मुझे वो? I don't know even. I think it's कैसे a ये data निकला? ये data bank से आया है. How to not panic examination hall? Okay, I'll just say, yeah, understand if the paper is tough, सबके लिए tough है. अगर CSAT अच्छे से class ले रहा है, सबकी class ले रहा है. So if you have given your 100%, that you should know कि अभी बाकी सबके बराबर ही मेरी बैंड बजी पड़ी है. So this thought that when humans suffer in a group, then suffering feels to be less. And whenever you are giving exam, अगर tough है तो सबके लिए tough है. This will help you to keep a tab on your nerves. I think interval PYQ we have answered. I'm reading most of the questions have already been answered, ma'am. Specifically, if there's a new question, you can ask it right now. I'll just wait for 5-6 more minutes. Please write it in the chat box. I'll comment. Take one topic each part. If you have completed anthro classes, then for revision I'll suggest you a unique way. So what you should do कि अगर आप anthro में, if you're starting from socio cultural paper 1 का, then अगर आप socio cultural anthro का पढ़ रहे हो and you're studying anthro for 4 hours a day या 3 hours a day, so अगर 4 घंटे दिन में पढ़ रहे हो तो 3 घंटे paper 1 पढ़ो और 1 घंटे start paper 2 also, revise paper 2 also, because then you will be able to interlink certain topics. For example, if you are reading about marriage, culture, marriage, kinship from paper 1, and if you are reading the same for tribes if, in paper 2, and if you are reading something in society in paper 2, then you will be better able to interlink it. So that will really help you. लोग बोलते हैं ना इंटरलिंकिंग करो, इंटरलिंकिंग ऐसे करो, तो वो इंटरलिंकिंग थ्योरी से एग्जांपल से ऐसे हो सकता है. सो इफ यू आर रिवाइजिंग देन गो फॉर. What was the timetable? अरे यार timetable तो बस ये कब जब मैं उठ जाता था, I used to wake up a little late. जब ये सोने जा रहा था तो मैं उठता था. So both of us got through. So it depends on you. Make your own timetable, but be sure that you're putting in those 8 and 9 hours a day. You are exercising a bit. You are taking some time for your hobbies and all. And if you are a working professional, then what you can do, you can initially
when you're starting the preparation, you can dedicate 3-4 hours daily in your normal weekdays, and in during the weekend you need to devote extra time around 10, 11 or 12 hours. And always know that Dwij cleared his first attempt prelims and almost just by I think 5 marks couldn't get through mains while he was a working professional. So it's not possible to clear this exam. A lot of people came to Labashna this year. A lot of our friends directly after resigning from their active jobs. So you can find a way out. Don't feel like that you are being left behind just because you have a job. How to be consistent? Make a timetable, make a schedule, make an everyday schedule, write it down on a board in front of your room, stick to it. But only disasters and natural calamities should deter you from your schedule and nothing else. जैसे आपका timetable क्या था पढ़ने का? So I used to get up at 5:30 in the morning. I used to go for morning walk. Thereafter, I used to study from 6:30 till 9, then 10 till 1 o'clock, then 3 to 6. So I used to study in 2-3 घंटे की sittings में. ऐसे ही करना Because चाहिए that वो एग्जाम में वो बैठने का लिखने का में कभी fear नहीं रहता है फिर. So I used to study like that around for roughly 9 hours, and that used to calibrate it to 8 hours. I used to wake up at 10 or 11 in the morning. Then I used to rant to Dwij and Subhratosh. तुम लोगों ने कितना पढ़ लिया, मैं तो अभी सो के उठा हूँ. Then I used to start studying. Then when they used to sleep, तब मैं अपना चाय बना के पढ़ने बैठता था रात में. So it was an inverted timetable for me, but I corrected it when I was coming close to the exam. वो 5 o'clock correct कर लेना चाहिए अपना. And I think it's very College important में हम लोग to take care of yes your ma'am. health also, like your mental health and your overall health also. As you said that आप morning walk के लिए भी जाते थे, तो those who Physical are activity. And we both used to go to gym as हम well लोग in जिम the जाते थे evening. और मैं तो गिटार भी तो अपने बजाना आप को हर चीज से प्रिपरेशन कट में ही ऑफ सीखा करना है is not the solution, right? You have to have some Because hobby. one of the aspirant is asking कि distraction से कैसे बचें? How to avoid distraction during studies? I मैं think पहली बात तो सोशल मीडिया हटा दो. we did not have Instagram, Facebook, whatever. हमारा ग्रुप भी जो था वो टेलीग्राम सिग्नल वाला पे था जहाँ पे और कोई चैट नहीं आपको देखने को मिलेगी. एंड शेड्यूल, आई थिंक शेड्यूल इज इनफ. मतलब आप शेड्यूल को स्टिक कर रहे हो अपने, उसके बाद आप सोशल मीडिया भी चला रहे हो, जो भी करो इट्स ओके, डिपेंड्स ऑन यू, बट stick to your schedule, make a schedule and stick to it. That is one basic thing to how to know the demand of each stage of this exam. यार वही बात है, अभी डिस्कस किया था, प्रीलिम्स में एमसीक्यू सॉल्व करना है. इफ यू हैव टू लीव यू कैन लीव. प्रीलिम्स में एमसीक्यू सॉल्व करना है, सो यू हैव टू बी मोर लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर और एमसीक्यू सॉल्वर काइंड ऑफ अ गाय. अगर आपको मेंस में जाना है तो आपको आंसर राइटिंग स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस योर कंटेंट इन द एग्जाम. इंटरव्यू वी विल टॉक अबाउट इट वंस यू क्लियर मेंस, बिकॉज इंटरव्यू इज समथिंग आप लाइफ में उतना आगे प्रिपरेशन में आ जाते हो दैट यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली डू समथिंग. It's just your personality, just to go and talk to them about things that interest them. Read Peanuts or Ember Ember. Yeah, we read it because we couldn't take active classes. If you have some other source, if you have your mentor teaching you, I think you don't need it that much. Great. I think, ma'am, we're done with everything. This is something like, because there's so many questions and I'm really running short on time. I have a lot of submissions coming up tomorrow. So, and he is going for his posting very soon. He's done with his training. So both of us are like in the middle of something, but we are glad that we could find this time and come and discuss something. If there's something else again, I think Karandeep, we'll be talking to Karandeep sir. We can always come and interact. So are we talking about phase 4 now, which is about the intensive prelims preparation? And we have talked about the January se May wala part jo tha, that is like the phase 3 part of it. And once you're done with it, then I think we should have a separate sort of session, because since knowing that all the students are people, most of them, they still start in the beginning of the preparation. So the phase 4 hai that actually comes once you're done with prelims and ab aapke paas 70 odd days hain means tak ke liye. So we can have a different sort of a session where we can discuss about specifically कि answer writing कैसे करना है उस period के बीच में. And specific prelims की भी जो 3 महीने का वो एकदम ब्रेक थ्रू स्ट्रेटजी होती है या प्रीलिम्स डेडिकेट की वाली स्ट्रेटजी होती है फॉर 90 डेज 95 डेज. आई थिंक अभी तो यही है कि उसमें पीआईक्यू सॉल्व करना और मल्टीपल रिवीजंस प्लस करंट अफेयर्स भी आ जाती है उस टाइम पे, सब चीज करना एक साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है. But I think we can have a separate session in January or somewhere around that,
ताकि हम वो डेडिकेटली सब्जेक्ट वाइज पे फोकस कर और पाएंगे, किस हमारे सब्जेक्ट को और our कितना वेटेज देना successors another rank 71 and हाँ, rank 86 will come will and they'll have come a better after 2-3 days, inputs to give very soon. right? Yes, yes, sure, sure. One more doubt is there that those who are taking coaching classes और अभी जो coaching classes लेना start करेंगे तो उनको उनके खुद के value addition या कुछ separate notes जो है वो अलग से बनाने चाहिए या उनको handouts में ही बनाने चाहिए notes का they are very confused about that. आप उसको I अगर think address करें तो I think they should make it on the primary notes only. जो हमारे primary notes होते हैं वो class notes हो, handouts हो या book से बनाए हुए notes हो, information उसमें होनी चाहिए जो मैं उठा के exam में डाल सकूं. So अगर आप coaching classes ले रहे हैं, आपके notes give them importance, make good notes in your class, make them as your primary right. source, then उसके ऊपर आप addition कर सकते हो. उन handouts के ऊपर आप addition कर सकते हो. But अब उसके अलावा अपना काम two times करोगे, basic book पे जाओगे, फिर notes बनाओगे, it's a lot of chaos then. I think you should just take your main notes as your basic and then build on that. And one more thing I want to inform everyone, those who are asking questions regarding anthropology specifically. So, जब सर को time होगा, we will be having a anthropology specific session also, जहाँ पर आप बहुत detailed अपनी strategy के बारे में बात कर सकते हैं. And उसके बाद में आई थिंक वो ज्यादा सही रहेगा. अभी जीएस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. And if they have Karandeep sir as a mentor who can, I think we can't tell it as good as he did because we have learned from him only. So they can directly, have a session with him and he will be able to tell much better than us about how to crack it. Because I have, if you see, मतलब हम लोग we can just take some part of from our mentors and then we have to make our own strategies ultimately. So I think that will work out Yes. for everyone. And one more thing that all of those aspirants या सब लोग inspire करते हैं that they clear this exam in the first attempt, and I really wish everyone who appears वो first attempt में clear कर ले. But sometimes it happens, as you also told that Dwij 5 marks से रह गए थे, या in fact or you also somewhere missed it from 8 or 7 marks. तो वो हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, फिर सेकंड अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, या मल्टीपल अटेम्प्ट्स के जो स्ट्रेस है उसको कैसे उससे कैसे डील करना चाहिए. एक फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, जब सेकंड अटेम्प्ट में आते हैं तो कैसे करना होता है. मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी चीज को ना बहुत दिल से नहीं लेना है यूपीएससी में, क्योंकि डिस्कनेक्ट होना चाहिए. सो व्हाट वी डू नॉर्मली डू, हर कोई ये गलती करता है कि यूपीएससी को हम पूरी लाइव बना लेते हैं, उसके बाहर हमें ना कुछ दिखता है क्योंकि हम दिन का अपना सारा टाइम उसे ही दे रहे हैं. बट एक पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है. तो मुझे लगता है ना प्रीलिम्स के बाद घूमने चले जाना चाहिए थोड़े दिन के लिए, मेंस के बाद घूमने चले जाना चाहिए. जैसे कि अभी भी मैं बोलूंगा जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि जनवरी फेब में जब डेडिकेटली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करो, उसके पहले 3-4 दिन का ब्रेक लेके घूमने चले जाना. तो क्या होता है ना कि हम लोग बाहर नहीं छुपाते कि वी आर अनेबल टू सी लाइफ एज अ होल. तो जब लाइफ एज अ होल दिखते हैं, एंथ्रो में तो स्पेसिफिकली हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, लाइफ एज अ होल दिखते हैं, तो देन वी रियलाइज कि ये तो एक बहुत स्मॉल पार्ट है हमारी लाइफ का. सो देयर इज मच मोर टू लाइफ. तो मुझे लगता है कि अगर ये चीजों को सोच के चलते हैं, थोड़ा सा सॉर्टेड रहते हैं, फैमिली के इश्यूज थोड़े ठीक रहते हैं, तो स्ट्रेस रिलीवर होता है. प्लस बाकी यू नीड अ गुड फ्रेंड सर्कल. Friends, family, God. हाँ, is something that you have to ultimately right, fall right. back on. I still remember 2022 में जो result आया 2021 का, all of us had given interviews, 5 of us, and we saw the result and none of us were in the final list. And prelims was just 5 days away. So एक दिन रोने में चला गया. अगले दिन से we all sat together. These were the people I solved my PYQs with. जब मेरा मन भी नहीं था, they pushed me and we helped each other to clear all prelims again. और उन 5 में 4 लोग next year साथ में हम लबासा गए. And one of us will, I think tomorrow she will be an IAS officer. We are expecting her result tomorrow, and that will complete the entire story. So friend circle is something, having a healthy friend circle is something that is very important in this. And talking about the friend circles, how important is it to have right guidance and mentorship? Like जिन लोगों को प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंटर्स उनके साथ इंटरेक्शन करना वो कितना इम्पोर्टेंट है. सीइंग द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, हर साल जो है थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो अब कितना इम्पोर्टेंट हो गया, आपको क्या लगता है? Ma'am, Your I friends think must also have been because they are the ones who are actually in the pool, right? They have been through this process a lot of times. They know the ins and out of it, and they can show you the path. And कभी-कभी क्या होता है ना, you are actually on the correct path, you are doing everything fine, you're getting good marks, even then you start doubting yourself. So then you need a mentor to tell me कि यार तेरी कॉपी मैंने evaluate करी है, ठीक है, I know that you have it in you. Someone else is telling you. Karandeep sir मुझसे
रात में I still remember 4:30 or 4:45 in the morning I texted him that I can't sleep, कल पेपर है मेरा, anthropology का, what do I do? And then we had a conversation on call at that moment in the morning, and he said, even if you can't sleep, you know everything so well that I know that you will be able to do it tomorrow. And after that I could get a good 1-2 hours peaceful sleep. So mentor play that role, that when you cannot trust yourself that much, there's someone else to tell you, okay, I trust in you, so you should trust yourself. And they have this way around this. So I think that's a very important role. Everyone should have this mentor in the preparation phase. एंड अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन फेज मेंटर का एक और काम होता है कि आपको ना लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताता है कि दे आर बिगर थिंग्स टू लाइफ. Right. एक ऐसा इंस्टेंस हुआ था प्रिपरेशन टाइम पे कि असद के घर पे कुछ हेल्थ इमरजेंसी थी और मेंस शायद 10 दिन दूर था और I was in उसको the hospital with my mother. सो उसको बहुत एंजाइटी थी मेंस की कि इस बार होगा कि नहीं होगा. बट जब उससे बड़ी चीजें आपके सामने होती हैं दिखने के लिए, व्हेन यू हैव बिगर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, देन यू रियलाइज कि ये तो सिर्फ लाइफ का एक पार्ट है. तो मुझे लगता है कि एक वो एंगल दिखाने वाला भी होना चाहिए आपको, एक चीजें बताने वाला भी होना चाहिए लाइफ में कि आप जो सोच रहे हो उसके बाहर भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, देयर आर बिगर थिंग्स टू लाइफ. तो आप फिर बहुत ज्यादा चीजों को कंसंट्रेट करके नहीं चलते, कि रिस्ट्रिक्ट करके नहीं चलते अपने माइंडसेट मतलब को. when I was there, मैं दूसरे कॉल पे बात कर रहा था. It was some 2-3 in the morning. My mom was in the hospital. Something really bad emergency happened. And then I realized कि यार एक हफ्ते में मेंस है, and I've stopped worrying about it completely because I have a bigger thing going on in my life. So then that's when you realize कि यार there's more to life than this exam, because आप एक जगह घोड़े की तरह एकदम ऐसे करके पढ़ते रहते हो. You don't realize some other things matter so much in your life. And that's when your friends and mentor reiterate this belief in you कि ठीक है यार, हो जाएगा. 2 साल तैयारी करी है, 2 साल 2.5 साल पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं है कि 7 दिन में कुछ खराब हो जाएगा. सो यू नीड ऑल ऑफ दीज पीपल, फ्रेंड्स एंड मेंटर, टू टेल यू दिस रिपीटेडली. There's this one doubt that I'm seeing here कि आपने जो बिगनिंग में स्ट्रैटेजी बताया, जो बिगनर्स हैं फर्स्ट 6 मंथ्स की अगर हम बात करें, तो एक सब्जेक्ट अगर वो कंप्लीट करते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर कंप्लीटिंग इकोनॉमिक्स एंड देन दे आर स्विचिंग टू द पॉलिटी, उसमें क्या होता है, दे वांट टू नो दैट हाउ टू रिवाइज द इकोनॉमी नाउ. वो पीछे जाकर दोबारा, क्योंकि ऐसा लगता है कि भूल गए हैं इकोनॉमिक्स, अब पॉलिटी स्टार्ट करने लग गए हैं, तो हाउ टू मेक दैट बैलेंस? आई वोंट सजेस्ट कि आप एकदम से रिवाइज करो, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो फिर से इकोनॉमिक्स एकदम से रिवाइज कर रहे हो, केओस हो जाता है. तो टेक योर टाइम, 2 महीने का टाइम दो कि आई हैव स्टडीड पॉलिटी फॉर अराउंड 15 डेज. उसके बाद 1.5 महीने बाद फिर से पॉलिटी उठाओ, देन स्टडी इट. तो उसमें जब आपको स्टडी करना है ना, तो आपको पहले तो ये देखना है कि कितना, हाउ मच कैन यू रिकॉल, तो आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, कितना आपको याद है. तो जब सेकंड रीडिंग कर रहे हो उसकी, देन स्टार्ट नोटिंग कि क्या चीज है जो मैं भूल जा रहा हूँ. डबल मार्केट, स्टार इट अपने आप उसको. तो वो नोट्स मेकिंग के जो तरीके होते हैं, आप उन सबको यूज करो, हाईलाइट करने के तरीके यूज करो, इटरेशंस में. राइट. और टेस्ट से होता है. आप टेस्ट दोगे, आपको पता लगेगा कि यार इकोनॉमी मुझे ये नहीं आता, गो बैक एंड रिवाइज इट. आइट्रेशंस में आप करेंगे. और डू नॉट थिंक कि अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, मैं वो भूल गया. यू विल फॉरगेट इट. बट कल को अगर you have to write an answer on it, you will be able to write an answer on it on the basis of what you have read. So आप आइट्रेशंस करते जाओ अपने सब्जेक्ट्स के. जीएस 1 2 3 4 किया, ठीक है, ऑप्शनल किया, फिर से जीएस 1 2 3 4 किया, ऑप्शनल किया. इस प्रोसेस में यू विल कीप ऑन गेटिंग बेटर. अगर आप उसको ब्रेक करके एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे जाना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज गो, बट गो टॉपिक वाइज ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन नॉट सॉल्व इन द टेस्ट पेपर. आप सब कुछ एकदम से रिवाइज नहीं कर सकते. एंड इट रिक्वायर मल्टीपल इटरेशंस. अगर पॉलिटी है तो आपको 2 बार में याद नहीं होगी, यू आपको नीड टू रीड इट 10-15 बार तो आपको पढ़नी पड़ेंगे, पड़ेगी, तभी आपको याद होगी. तो so you have to accept it, you have to be patient. Yeah. थोड़ा पेशेंस तो लाना. So thank you Dwij and Asad, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, and since you have so many important things lined up for you now, so I won't be taking much time of your people don't want you to leave. They're like, sir suniye. We can have, ma'am, Okay, I'll talk to Karandeep sir, and probably we can, because I live here, Dwij is going to go for his postings. I am in Delhi now, so we can always have this again. Webinar in few alternate months or कुछ ऐसा, जहाँ पर I would advise all of you to just start your preparation now. I think हम लोग basic doubts ले चुके हैं, and sir has also both of them have also discussed जो basic strategy रहता है, जो phases में strategy रहता है month का, so everything has been discussed. तो I can allow you to. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you for having and us. all the best, everyone. Keep trusting yourself. Keep the We process. can have now बहुत Santosh ज्यादा Sir तो जो लोड नहीं आपके. लेना है. Things will happen eventually. Sorry.
माय फाइनल Yes, एडवाइस yes. है कि बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, थिंग्स विल हैपन इवेंचुअली एट देयर ओन पेस, धीरे धीरे करते रहनी है मैंने।